सो सेक्शन 13 AML CFT रेगुलेशंस का ऑनगोइंग मॉनिटरिंग, इसमें ये बताया जाता है कि भाई जो ऑल बिजनेस रिलेशन होंगे ना कस्टमर्स के साथ, उनको मॉनिटर ऑनगोइंग बेसिस पे किया जाएगा कि ट्रांजैक्शन कंसिस्टेंट है, रेगुलेटेड है, पर्सनस नॉलेज ऑफ कस्टमर। ठीक है, कहीं अनयूजुअल ट्रांजैक्शन या कोई ऐसी वैसी ट्रांजैक्शन तो नहीं हो रही जो मतलब AML या CFT को डिमॉन्स्ट्रेट करती हो। एंड हाई रिस्क प्रोफाइल एंड वेयर अप्रोप्रिएट सोर्सेज ऑफ फंड्स, सारा कुछ मतलब पता होना चाहिए। रेगुलेटेड पर्सन शैल ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन एंड एग्जामिन एज फार एज पॉसिबल background or purpose of all complex and unusual transactions which have no apparent economic or visible lawful purpose and background and purpose of these transactions shall be inquired and findings shall be documented with view of making this information available to the relevant competent authorities when required. Regulated person shall periodically review the adequacy of customer information, ठीक है, obtain in respect of customers and beneficial owner and ensure information is kept up to date and relevant by undertaking reviews of existing records, particularly of higher risk categories customers, and review period and procedure thereof should be defined by regulated person in their AML CFT policies as per base रिस्क बेस्ड अप्रोच। ठीक है, रिस्क बेस्ड अप्रोच की बेस पे वो पीरियड डिसाइड करेंगे कब कब रिव्यू करना है। इन रिलेशन टू सब रेगुलेशन 3, customers profiles should be revised keeping in view of spirit of know your customer /CD and basis of review shall be documented and customer may be consulted if necessary. A regulated person files STR on reasonable grounds for suspicion that existing business relationship with the customer are connected with MLTF. The regulated person may consider it appropriate to retain the customer, to substantiate and document the reasons for retaining the customer and the customer's business relations with the regulated person shall be subject to proportionate risk mitigation measures including enhanced ongoing monitoring। ठीक है, the regulated person should monitor the relationship with the entity and individual mentioned in subregulation 5A this। ठीक है, of regulation 6 on continuous basis to ensure that no relationship exists directly or indirectly through ultimate control of account where such relationship is found, the regulated person shall take immediate action as per law, including freezing the funds assets of such prescribed entity and reporting to the commission। यानी कि ये कंटिन्यूस करेगा जिन एंटिटीज का ताल्लुक है, कोई भी एंटिटी का ताल्लुक ऐसी एंटिटी के साथ ना हो जो मना की गई है, जिनके साथ अलाउ नहीं है, तो फिर वो फ्रीज कर देंगे। 14 रिपोर्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन STR CTR, regulated person shall comply with provisions of AML Act and rules, regulations and directives issued thereunder for reporting suspicious transactions, currency transactions in context of money laundering। ठीक है, वो रिपोर्टिंग करेंगे और कंप्लाई करेंगे। Regulated person shall implement appropriate internal policies, procedures and control meeting the obligation under AML Act. Regulated person shall pay special attention to all complex and unusual patterns of transactions, ठीक है, which have no apparent economic visible reason, purpose, lawful purpose नहीं है। Background and purpose of such transactions shall as far as possible examine and findings establish relevant authorities को दे दी जाएंगी। The transactions which are out of character, inconsistent with the history pattern, normal operation of the account and not commensurate with the level of income of the customer shall be viewed with suspicion, be properly investigated and referred to compliance officer as far as officer for possible reporting to FMU under the AML Act। और ट्रांजेक्शन जो भी आउट ऑफ कैरेक्टर होंगे वो फिर रिपोर्ट होंगे। सिंपल ये है। रेगुलेटेड पर्सन शुड नोट दैट STRs including attempted transaction should be reported regardless of the amount of the transaction, and CTRs, STR suspicious and CTR currency should be reported to the transaction of the rupee 2 million and above। दी गई है 2 million मतलब 2 million एंड अबव सारी रिपोर्ट होंगी। ठीक है, 2 million अबव CTR में जाएंगी।
So the basis of decision whether STR is being filed or not shall be documented and kept on record together with all internal finding and analysis done in relation to the suspicion in respect of irrespective of the fact that transaction is subsequently reported or not. ठीक है, डॉक्यूमेंट करनी reasons वगैरह. The employees of regulated person are strictly prohibited to disclose the fact to the customer or any other court in the quarter that STR related being or has been reported to the NLC except if required by law. Regulated person, without disclosing the contents of STR, shall intimate to the Commission by annual basis the number of STR reported to FMU, and regulated person shall ensure that status report indicating number of STRs only shall reach AML department from the 7 days of the close of the half year. ठीक है. 14A इसमें क्या कहते हैं, counter measures against high risk countries. Counter measures against high risk. Regulated person shall adopt countermeasures including but not limited to enhanced due diligence to the risk and according to the risk proportionate to the risk to the business relationship or transaction with their customer belonging to such countries for which this is called upon by FATF and as notified by the federal government. Commission on the advice of federal government regarding weakness AML CFT system of the other country shall direct the regulated person to adopt countermeasure to in accordance with the regulation with the customer belonging to such countries. ठीक है. मिसलिनियस इसमें क्या है, रिकॉर्ड कीपिंग, इसके बारे में बताया गया कि रिकॉर्ड कीपिंग क्या होगी. ठीक है, ये हम इसमें से मोटा मोटा देख लेंगे. 5 years. ठीक है, और रिकॉर्ड्स सफिशेंट होने चाहिए और आइडेंटिफिकेशन डाटा CDT कॉपीज़ ये सब वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट द रिजल्ट एनालिसिस अलॉन्ग द रिकॉर्ड्स फाइल विल बी मेंटेन मिनिमम पीरियड ऑफ 5 years. ठीक है, 5 years. इसमें बस ये लिखा हुआ है कि ये 5 years है, 5 years. ठीक है, तो ये टाइमली अवेलेबल करेगा CDD ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कमीशन FMU जो यहाँ भी रिक्वायरमेंट होगी. Foreign branches and subsidiaries. Regulated person shall pay particular attention to their branches and subsidiaries located in countries which do not sufficiently comply with FATF recommendation. ठीक हो गया, उनके ख़ास वो करेगा, पार्टिकुलर अटेंशन देगा. MLCT पॉलिसीज़ ऑल ब्रांचेस को अप्लाई करेगा. सही है. आउटसाइड पाकिस्तान. सही है. CML AML CFT requirement in the host country from those in Pakistan. Regulated person shall require their overseas branches or subsidiaries to apply the higher of the two standards. जो भी होगा हायर वो अप्लाई करेगा वहाँ पे या पाकिस्तान का. Where the law of the host country conflicts with AML, यानी कि होस्ट कंट्री के भी अपने लॉज हो सकते हैं. अगर लॉज वो पाकिस्तान से स्ट्रॉन्ग है तो वो फॉलो करेंगे, अदरवाइज पाकिस्तान का अपना ही फॉलो करेंगे. ठीक है. कॉन्फ्लिक्शन है तो overseas branch subsidiary unable to fully observe the high standard developed person shall report to the commission and comply with such direction as may be issued. अगर कॉन्फ्लिक्ट है और वो फॉलो नहीं कर सकते तो फिर वो हायर वाला फॉलो नहीं हो सकता तो फिर वो कमीशन को बताएगा और फिर डायरेक्शंस देंगे जो भी होंगी. करस्पॉन्डेंट रिलेशनशिप. ये क्या होता है, रेगुलेटेड पर्सन शैल परफॉर्म द फॉलोइंग मेजर्स. ये इसमें से देख लेते हैं कि हम जो सिलेबस है वो यही है, नोट्स में लिखा होगा. तो ये 2010 SCP 2020. ठीक है, ये पूरा ही है तकरीबन. सो नो प्रॉब्लम, हम इसको कंटिन्यू रखते हैं. Regulated person shall perform following measures in addition to the measures prescribed in this regulation when forming a correspondent relationship. Assess the suitability of the respondent financial institution by taking into following steps. Gather adequate information about the respondent
respondent financial institution to understand fully the nature of respondent financial institution including making appropriate inquiries. ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा मुझे. इनको असेस करना है और डिटरमिन करना है अवेलेबल सोर्सेज से, रेपुटेशन उसकी असेसमेंट करनी है, रेस्पोंडेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के कंट्रोल्स की. ठीक है, क्लियरली अंडरस्टैंड करना है, डॉक्यूमेंट करना है रिस्पेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. ठीक है, असेस द रेस्पोंडेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ये सैंक्शंस, obtain approval from the financial institution senior management before providing correspondent services to new financial institutions. ठीक है, regulated person shall document the basis for its satisfaction requirements met हैं. ठीक है, regulated person shall pay special attention in establishing continuing correspondent relationship. अब ये correspondent relationship होता क्या है इसको भी देख लेते हैं. correspondent relationship relationship between two entities often in different locations or countries. ठीक है, बैंकिंग, बिजनेस, लीगल, जर्नलिज्म. ठीक है, मेनली बैंकिंग की बात हो रही है मेरे पास. correspondent bank relationship is when one bank provide service on behalf of another bank. अच्छा, ठीक है, और किसी और बैंक के बिहाफ पे कोई सर्विसेज देता है तो वो correspondent relationship होगा. ठीक है, तो उस मामले में भी सब कुछ देखना है. सही है. FATF inadequate and poor AML standard to fight against money laundering. ये सब नो रेगुलेटेड पर्सन शेल इंटर कंटिन्यू. मतलब पाकिस्तान से बाहर कोई बैंक है, उसने कहा पाकिस्तान में मेरे किसी कस्टमर को रिलेशनशिप फाइनेंशियल सर्विसेज दो, तो फिर वो सब चीज़ें अप्लाई हो जाएंगी. बस ये सेक्शन अलग है ज़रा 17 वाला. अदरवाइज बातें सारी वही हैं कि कंटिन्यू नहीं करना, ये सब टेररिज्म फाइनेंसिंग ये सब देखना है. ठीक है, कंटिन्यू जर्नी वो नहीं करेगा, दैट डज नॉट हैव एडुकेट कंट्रोल अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग. ठीक है, उसके ब्याह पे कंटिन्यू नहीं कर सकता वो. For the purpose of this regulation, the expression shall financial institution means a financial institution incorporated from or established in a country or jurisdiction where the financial institution has no physical presence and which is unaffiliated with the financial group that is subject to effective consolidated supervision. A regulated person shall also take appropriate measures when establishing correspondent relationship to satisfy itself that its respondent financial institution do not permit their accounts to be used by shell financial institution. ठीक है, उनके अकाउंट शेल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में यूज़ नहीं होते. शेल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये होता है, ऊपर हमने पढ़ा है कि उसका कोई उसमें फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती, बस अलग से होता है और वो बस लिमिटेड लोगों को कुछ सर्विसेज देते हैं, उन पर कोई सुपरविजन भी नहीं होती. ठीक है, 18 पे आते हैं. अपॉइंटमेंट ऑफ कंप्लायंस ऑफिसर रेगुलेटेड पर्सन. 18 को नेक्स्ट करते हैं.